हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ओम्स लॉ पढ़ाने वाले हैं एंड दिस टॉपिक इज आल्सो द पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने इससे पहले वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें से मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। अगेन हियर इलेक्ट्रिक करंट इज डोनेटेड बाय आई एंड इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज per unit time through the cross section of a conductor, and simply we can say rate of flow of charge। हम लोग सेकेंड टॉपिक में आते हैं, जिस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करना है, ओम्स लॉ। दिस लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, और एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को स्टेबल किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the flow of current through a conducting wire or through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, keeping physical condition like temperature, strength remains constant, remains unchanged. Suppose that this one is a conductor. Suppose this is a conductor of length L. Now, if it has some resistance like this, it is the symbol of resistance. It is the symbol of resistance. It indicates like a continuous mountain, which behaves as obstacle. Suppose that if a current I is flowing through it, and here is R, it is the resistance. I will explain after this what is resistance. So now when current approaching to this part, then a potential is dropped, that V equal to retain as IR. And now we have, according to Ohm's law, the flow of current is directly proportional to the potential difference applied across the ends of this conductor. And also we can say in this figure if it is a conductor having a resistance R and it is what? Current I, and now it is connected to a potential difference. It is a potential difference. Also here we can write or V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. And when we omit this one, then here we put equality sign with a constant. It is the rule, and this will be I. In place of constant, here we put a letter R known as resistance. Also it is written as V equal to Ri. Now here, this one is a very important formula. It is a very important formula. With the help of this formula, we can find I if V and R is given. We can find the R if V and I is given. And also in the figure, also we can say here V equal to IR. Here this V is the applied potential and I is the current flowing through it. And this R is in place of constant, but it is constant. This R is constant of proportionality, and known as resistance of the material. Now it is constant within a certain condition, which already I discussed. Now what will be the graph for V versus I or I versus V? Now this graph is known as VI graph. This is known as VI graph for the conducting wire. Okay? But here I written like I and in this side V. Why? Because on the basis of mathematics, this side will be independent variable quantity and the upside will be the dependent variable quantity. And here what? V is independent variable quantity and I is dependent variable quantity.
Now these two are proportional to each other, so the graph will be a straight line, and this graph will represent the r. R is constant, and this will be the slope. This will be the slope. This will be the slope. Now here, this r is also written as कि r is the ratio of potential difference applied to the current. It is also a mathematical definition of resistance. It is also a mathematical definition of resistance. I will explain the physical meaning of resistance. Now, this graph is valid for Ohm's law, and the material which obeys this law known as ohmic conductor, and this graph is for ohmic conductor or ohmic material. Okay, ohmic material here. Now also what we have for non-ohmic material. Non-ohmic material is what? If it is I versus V graph, and graph is not a straight line but like this, it indicates that here the Ohm's law, that is I directly proportional to V, is not followed. इसका मतलब यहाँ है कि इस ग्राफ से साफ इंडिकेट हो रहा है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है. इसका मतलब ये जो भी मटेरियल है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, एंड सच टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज नॉन ओहमिक मटेरियल, एंड दैट वन इज सिंपल एग्जांपल इज सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा. एंड ओहमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, आप हम लोग यहाँ पर आयरन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे मटेरियल है जो ओम्स लॉ को यहाँ पर फॉलो करता है. फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस ग्राफ से ये स्लोप क्या क्या हमें देता है. हमारे पास तो एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V बाई आई. ये इक्वेशन 1 हो गया. लेकिन अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, मानते हो OAB. अब देखेंगे हम लोग कि ट्रायंगल OAB में तो हमारा आ जाएगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस. दिस वन इज परपेंडिकुलर डेल I एंड दिस वन इज बेस डेल V. सो वी कैन राइट हियर डेल I बाय डेल V. बट what here? And also we can write, we can write in terms of simply I. If the value of I is given directly, the definite value of I and definite value of V is given here, what we can write I by V also. And in equation 1, what we have V by I. So if we reverse it, so what will be 1 by tan theta barabar V by I. This will be equation number 2. And now from equation 1 and 2 we observe that the right hand side are same. So what? Right hand side are same, so left hand side also will be same here. And from 1 and 2 what will be? R equal to 1 by tan theta. This tan theta is here slope. If the value of theta will increase means resistance of the material will decrease and current will be maximum. And we have a simple example. You see, now we have a figure here, and it is the graph between current versus voltage. Now we have two graphs, say A and B. Now angles are different. This one is theta 1, this one is theta 2, and here theta 1 is less than theta 2, means the slope of the value of slope A has greater value. So no doubt material A has what? Less resistance, because resistance is inversely proportional to what? Tan theta. So here theta 1 is less than theta 2, means the material R1
or material B of resistance R1 is greater than the resistance of material A R2. So no doubt current in material A will be greater than current in material B. These are the concept related to ohm. Here resistance, here theta, this theta is less than this theta 2. Now, and so it indicates that the resistance of B, this one, resistance of this material will be what? Greater than resistance of this material, this one. So no doubt current, as we have current V equal to IR and current is inversely proportional to R. अब जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस मटेरियल में करंट कम फ्लो होगा। हम लोग देखते हैं कि मटेरियल ए के पास रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हमारे पास मटेरियल ए के पास ज्यादा है, ठीक है। मटेरियल स्टॉप नाउ हियर कि थीटा 1 is less than theta 2. It indicates that the resistance of B will be greater than the resistance of A. As we have V equal to IR, so I is inversely proportional to R. So हम लोग यहाँ देखते हैं इस रिलेशन में रेजिस्टेंस ऑफ B क्या है? ज्यादा है, तो उसका करंट क्या होगा? कम होगा, और करंट A में ज्यादा होगा। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग बहुत सारे चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, करंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ ओम्स लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, इन सारे चीजों को हम बोलते रहेंगे। और हमारे वीडियो का खासियत यही है कि हम जो सीबीएसई का सिलेबस है, मैं उस सिलेबस के आधार पर जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिलेबस आई एम मेकिंग द वीडियोज विच विल बी बेनिफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट। सो थैंक यू एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।